Good morning, students. Today I will discuss chapter 1, crop production and management. First of all, food is one of the basic necessities of life for all living organisms. Food provides energy for carrying out all body functions such as digestion, respiration and excretion. Food is required for growth, development and repair. It also protects the body against diseases. In previous class, 7th class, all you have read the process, digestion, respiration and excretion. Among all the living organisms, only green plants make their own food. You all know how green plants form their food. They form their food by the process of photosynthesis. In previous class or 7th class, you have read the process photosynthesis. Photosynthesis. Here, photo means light or sunlight. Sunlight, meaning of photo. Synthesis, to make. So, green plants make their own food by the process of photosynthesis. Now, in this chapter, I have read about crop and their production and different type of crop. First of all, there are two terms. First is food gatherer. Name से ही clear है, gatherer. Food gatherer means those who collect food. Collect food. And second is food producers. Food producers. It means farmers which produce food. Now the term comes agriculture. Agriculture is an applied science that deals with the mass production of crop plants and animals useful to human beings. एग्रीकल्चर वो साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम क्रॉप की स्टडी करते हैं और साथ ही साथ एनिमल्स की, और वो एनिमल्स जिन्हें डोमेस्टिकेट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न. व्हाट इज क्रॉप? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्रॉप? मीनिंग ऑफ क्रॉप: plants of the same kind grown at a particular place on large scale is called a crop. There are some example of crop are wheat, means that all the plants grown in the field are of wheat. It means cereals like wheat, rice, maize. इसमें क्या होता है, एक ही फील्ड पे सिंगल टाइप ऑफ प्लांट्स को ग्रो किया जाता है. सो दीज सीरियल्स आर कॉल्ड क्रॉप. And the product of cultivated plant is called crop produce. जो crop का जो product है उसे हम कहते हैं crop produce. Now there are different type of crop. So I will discuss types of crops. There are different type of crop. First is cereals. There are so many examples of cereals like wheat, rice, etc. Second is pulses. Previous class 7th में आप pulses के बारे में पढ़ के आए हो. Leguminous plants होते हैं, वो सारे फॉर्म करते हैं pulses को. So pulses are all type of दाल, pea, gram, beans, etc. Third type of crop is vegetables. All you know what are vegetables. हम फीड करते हैं vegetables like cabbage, brinjal, etc. Now next type of crop is plantation crops. Plantation crops are those crops which are grown in a particular area by making gardens, and it is transferred to different field like tea, coffee, rubber, coconut, etc. There are some medicinal crops like tulsi, neem, etc.
Now, after this topic, types of crops, now next term is horticulture. Horticulture. This is a new term, horticulture. This term is made up of two Latin words. First is hortus. The meaning of hortus is garden. And second is culture. Culture means to produce or cultivated. Horticulture is a branch of agriculture that deals with the production of vegetables, fruits, and ornamental plants. Ornamental plants are decorative plants which we use in our houses. Some important horticulture crops of India are potato, tomato, cabbage, apple, guava, pear, rose, etc. Now, my topic is after crop, my topic is crop pattern. In India, there are so many crop patterns or cropping patterns are used. But in 8th class, I have discussed only two type of cropping pattern. क्रॉपिंग पैटर्न जो टॉपिक है वो 9th में भी हमारा है और वहाँ वो हम डिटेल में बताएंगे आपको. बट इन 8th ओनली 2 क्रॉपिंग पैटर्न्स आर यूज्ड. क्रॉपिंग पैटर्न. There are only 2 type of cropping pattern in this class I have discussed. First is Kharif crop. Kharif crop. And second is Rabi crop. Rabi crop. Kharif crop is also called winter crop. Winter crop or winter crop. So firstly I discuss the Kharif crop. What is the meaning of Kharif crop and how it can be explained? The crop that are sown in the rainy season are called Kharif crop. Kharif crop means जो crop rainy season में grow की जाती है is called Kharif crop. Kharif crops are sown at beginning of the monsoon season, June and July. Monsoon start होते हैं June and July. Then it can be sown and harvested at the end of monsoon season like September and October. Kharif crop depends on monsoon rain for growth. Example, rice, maize, soyabean. Examples are rice, maize, soyabean, etc. And second is Rabi crop. Rabi crops are sown at the beginning of winter season like October and November and harvested in the month of March and April. Rabi crops do not depend on monsoon rain for growth. ये मानसून रेन पे डिपेंड नहीं होती रबी क्रॉप्स. There are some example of Rabi crop are wheat. Examples wheat. आजकल wheat की हार्वेस्टिंग हो रही है. So wheat is an Rabi crop. Now, in these days, a new term arises that is called hydroponics. So, now I will discuss hydroponics. What is hydroponics? Hydroponics. Hydro means water. इन दिनों में ये टर्म बहुत यूज की जा रही है और लोग घरों में भी यूज कर लेते हैं इस टर्म को. इसके कारण क्या होता है? विदाउट द हेल्प ऑफ सॉइल, हाइड्रोपोनिक्स इज ए टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन विदाउट सॉइल. न्यूट्रिशन
प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है, सॉइल की कोई नीड नहीं है, और उसके साथ भी प्लांट्स को ग्रो किया जाता है बाय दिस टेक्निक हाइड्रोपोनिक्स. It is successfully employed for commercial production of horticultural plants like vegetables and fruits. जो भी horticulture plants हैं, vegetables, fruits, ornamental plants, ये सब ग्रो किए जा रहे हैं आजकल बाय दिस प्रोसेस हाइड्रोपोनिक्स. हाइड्रोपोनिक्स में कोई सॉइल की नीड नहीं होती. विदाउट द हेल्प ऑफ सॉइल, सिर्फ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करके प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, और इन्हें बॉटल्स वगैरह में भी यूज कर लेते हैं. यस, नाउ एग्रीकल्चर जो की जाती है, जिससे फूड प्रोड्यूस किया जा रहा है. क्यों? क्योंकि फूड की जो नीड है इंडिया की और हमारी कंट्री की, उसके लिए दो मेन सोर्सेज हैं जिस पे टोटली पॉपुलेशन डिपेंड है. First is plants, second is animals. So for the technique of agriculture, there are so many agricultural techniques are used. Now I will continue the next topic. Some agricultural techniques. There are 6 agricultural techniques which are used for the production of food. First is preparation of soil. So first of all, I will discuss फर्स्ट टेक्निक, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. कोई भी फार्मर है, फील्ड के अंदर क्रॉप ग्रो करनी है, उसके लिए सबसे पहले वो फील्ड को प्रिपेयर करेगा, रेडी करेगा फॉर क्रॉप और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप. सो फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, एंड दिस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हैज बीन डन बाय 2 methods. First is plowing, and second is leveling. So first of all, I discuss the term plowing. What is plowing? It is first step of growing crops. It involves loosening and turning of soil. So how we can define the term plowing? Plowing is the process of loosening and turning of soil. जो सॉइल के कॉम्पैक्ट पार्टिकल्स हैं उनको लूज किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग. एंड टर्निंग मीन्स उलट पुलट किया जाता है. क्यों? क्योंकि सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इनसाइड द सॉइल होते हैं. सो सॉइल शुड बी टर्न ओवर. सो दिस इज कॉल्ड प्लोइंग. नाउ द टर्म इज प्लोइंग. लेवलिंग, सॉइल पार्टिकल्स आर लेवल किया जाता है आफ्टर प्लोइंग. क्योंकि प्लोइंग के बाद क्या होता है, जो भी पार्टिकल्स हैं वो लूज हो जाते हैं, टर्न ओवर हो जाते हैं. उसके बाद सॉइल शुड बी लेवल्ड. नाउ लूजनिंग ऑफ सॉइल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. देयर आर सम रीजन्स बाय विच लूजनिंग शुड बी डन. जो लूजनिंग है, जो प्लोइंग की जा रही है, जिसके कारण पार्टिकल्स को लूज किया जा रहा है. सो इस लूजनिंग की कुछ इंपॉर्टेंस है सॉइल के लिए, जिसके कारण लूजनिंग की जाती है. फर्स्ट इज लूज सॉइल पार्टिकल्स हैव मोर एयर स्पेसेस दैट हेल्प द रूट्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स टू ब्रीथ बेटर. फर्स्ट पॉइंट इज लूज सॉइल पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर एयर स्पेसेस डेवलप हो जाते हैं, जिससे जो प्लांट की रूट्स हैं वो बेटरली ब्रीथ कर सके. सेकेंड पॉइंट इज लूज सॉइल पार्टिकल्स होल्ड more water for a longer duration means time. लूज सॉइल पार्टिकल्स होंगे तो वो पानी को ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं. दिस हेल्प द रूट्स टू एब्जॉर्ब मोर वाटर.
और ये हेल्प करता है रूट्स की ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए. थर्ड पॉइंट इज और थर्ड एडवांटेज ऑफ लूजनिंग इज लूज सॉइल हेल्प्स रूट्स टू पेनिट्रेट डीप थ्रू द लेयर्स ऑफ सॉइल. थर्ड पॉइंट ऑफ लूजनिंग इज लूज सॉइल है तो रूट्स भी ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेट मीन्स एंटर कर जाती हैं सॉइल के अंदर. दिस हेल्प टू फिक्स द प्लांट्स मोर फर्मली मीन्स टाइटली. इससे जो प्लांट्स होते हैं वो टाइटली सॉइल पार्टिकल्स को एंकर करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं. फोर्थ पॉइंट इज लूज सॉइल मिक्सेस विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स मोर इजिली. नाउ these two words are most important and I will discuss these two words in detail after this topic. Manure and fertilizer. Manure, in brief, manure are organic compounds. Organic means living. जो भी चीज नेचर ने प्रोवाइड किया हमें in the form of peeling of vegetables, degrade material of animals, plants, vegetables, these are organic matter. So manure are formed by degradation of organic matter. And opposite, fertilizers are inorganic compounds which are made up of inorganic substances and made up in factories or companies. Now fifth point or fifth advantage of loosening is it helps to remove weeds from the field. Now the word weed, it is very important. Weeds are the unwanted plants which grow with our desirable crop. कई बार हमारी जो desirable crop है उसके साथ कुछ unwanted plants grow कर जाते हैं, are called weeds. And there are some chemicals which are used to destroy these weeds are called weedicides. Sides means chemical which are used for weeds or to destroy weeds. And next point is loose soil promotes the growth of useful soil microbes. Microbes means microorganism. In second chapter I will discuss in detail microbes. These microbes help to add humus to the soil. There are some microorganisms like bacteria, fungus which increase or add humus to soil. Humus is the waste material which is provided by these microorganisms and enrich the soil fertility. And last point or last advantage of loosening of soil is while turning the soil during plowing, nutrient rich soil is brought up from lower levels of soil. क्योंकि soil के अंदर बहुत सारे important nutrients हैं जो buried into the soil है और जब soil को lose किया जाता है तो वो turn over हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, upper layers पे आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो हम plants grow करते हैं वो mainly nutrients को कहाँ से feed करते हैं? upper layer of soil. So the plants can use these nutrients. And most important example or which is called farmer friend are earthworms. Earthworms को farmer friend कहा जाता है, friend of farmer, because they help to increase the soil fertility by providing or enrich or by loosening the soil. Loose soil करते हैं जिससे क्या होता है? Aeration provide होता है plants को, proper air absorb करते हैं plant. Secondly, जो waste material of earthworm है इससे soil की fertility increase होती है. So earthworm are called farmer friend and this is most important. और यहाँ से एक question भी arise होता है, why earthworms are called farmer friend? So answer is by two reasons they are called farmer friend. First is they provide aeration to the plants. Aeration means plants की roots को proper air provide करते हैं by loosening the soil. Second is their waste material which is used as a manure or enrich the soil fertility. So today's topic is complete. Now next topic has been started in second video. Thank you students.